Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance. In today's video, we are going to discuss about simple and compound interest, and we will solve the exercise questions of the book Business Mathematics by Muhammad Abdullah. लास्ट वीडियो के अंदर हमने 2010 से लेके 2019 तक इसके सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जो हैं, जो पेपर्स के अंदर आए हैं, उनको हमने सॉल्व और डिस्कस किया। और आज हम एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इफ रुपीज 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 6 years at an annual simple interest rate of 16%, how much interest will be earned? तो जहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट की बात है तो ये माइंड में रखें कि टू फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इज सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट में हम इसके फार्मूलाज को भी लिख लेते हैं और आप देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी केस में यही दो फार्मूलाज जो हैं ये आपके काम आएंगे। तो एक सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है और जो सेकंड फार्मूला है वो है अमाउंट का, यानी कि फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू जो है वो क्या है कि आप एक सर्टन अमाउंट जिस वक्त किसी भी जगह पे आप डिपॉजिट कराते हैं तो एक सर्टन इंटरेस्ट रेट के ऊपर आफ्टर सम टाइम पीरियड आपको जो इंटरेस्ट मिलता है और वो पैसा जो आपने डिपॉजिट कराया होता है, इन दोनों का जो सम है वो अमाउंट कहलाता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ये है कि एक सर्टन इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपके डिपॉजिट के ऊपर जो आपको अमाउंट मिलती है आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। और सिंपल इंटरेस्ट उस सूरत में कहलाता है जबकि आपका इंटरेस्ट हर टाइम पीरियड के चेंज होने पर या हर टाइम पीरियड के बाद वो सिंपल इंटरेस्ट अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाए, ना कि बैलेंस के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1000 रुपीज़ किसी बैंक में इन्वेस्ट किए हैं तो हर साल के एंड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है फॉर एग्जांपल 10%, तो उस 1000 के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। तो इस टाइप के इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो हर साल या हर टाइम पीरियड के एंड के ऊपर जो बैलेंस अमाउंट होती है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम दोनों में डिफरेंस हम देखें तो आपने फॉर एग्जांपल 1000 डिपॉजिट कराया और 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 1000 का 10% 100। और अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो 5 साल तक हर साल 1000 के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर पहले साल तो 1000 पे कैलकुलेट होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर 1000 प्लस 100 यानी कि 1100 पे कैलकुलेट होगा और ये आगे प्रिंसिपल अमाउंट जो बैलेंस है वो बढ़ता जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे डिफरेंस है। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर याद रखें कि ये दो फार्मूले आपके काम के हैं, सभी कुछ इन्हीं दो फार्मूलाज के अंदर कैलकुलेट होगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं जी कि इफ रुपीज 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 6 years एट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 16%, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का कहा गया है, तो सबसे पहले डाटा इसका ले लें। 10,000 इसका आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि P। 6 years ये आपके लिए N आ जाएगा टाइम पीरियड, और जो इंटरेस्ट रेट है वो है 16%। और इंटरेस्ट रेट को हमेशा फ्रैक्शन के अंदर ही लिखना चाहिए। तो 16 फ्रैक्शन लेना बहुत आसान है, सिंपली डिवाइड कर दें 100 के साथ।
तो 0.16। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करें, ये तीन चीज़ें इसमें पुट करें, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.16 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 9600। बी पार्ट है जी इसका, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द 6 ईयर्स, यानी कि सेम डाटा है और इसकी अमाउंट के बारे में यानी कि इस ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो डाटा क्या है जी, पी 10,000 एन 6 ईयर्स, इंटरेस्ट रेट 16% है जो कि 0.16, और अमाउंट का फार्मूला अप्लाई होगा, अमाउंट इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई एन। पी 10,000, 1 प्लस आई आपके पास 0.16 एंड एन है 6। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1.96 और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.96 इक्वल्स टू 19,600, यानी कि 6 साल के बाद 16% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपकी ये जो 10,000 की अमाउंट है ये 19,600 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3.2, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट फॉर द फॉलोइंग। तो ए केस है जी, यानी केस नंबर 1 है ₹2,000 फॉर 3 ईयर्स एट 5%। तो 2,000 आपके लिए पी है और एन टाइम पीरियड आपके पास 3 आ गया और इंटरेस्ट रेट है 5%, फ्रैक्शन में लेंगे तो 0.05, और आपने सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आई एन 2000 मल्टीप्लाई बाय आई आपके पास 0.05 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 300, जबकि अमाउंट का फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई एन। पी आपके पास 2000 है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.05 एंड n इज इक्वल्स टू 3, और अमाउंट आपके पास आ जाएगी 2300। इसका जो केस नंबर 2 है, ₹800 फॉर 7 ईयर्स एट 4%, यानी दोनों चीज़ें आपने सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट कैलकुलेट करनी है। पी आपके पास आ गया जी 800, टाइम पीरियड आपके पास आ गया n इक्वल्स टू 7, इंटरेस्ट रेट आपके पास आ गया 4/100 यानी कि 0.04, और सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है। पी 800, इंटरेस्ट रेट 0.04 और n आपके पास आ गया 7, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो सिंपल इंटरेस्ट 224 और अमाउंट का फार्मूला अप्लाई करें P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई एन। P 800 1 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय n यानी 1 प्लस 0.04 मल्टीप्लाई बाय 7, और सॉल्व करेंगे तो 1024। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपका, मिस्टर अस्कर बोरोड ₹5,000, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, ये सिर्फ डिपॉजिट पे नहीं होता बल्कि ये बोरोइंग के अंदर भी होता है। तो जो अमाउंट आप आज डिपॉजिट कर रहे हैं या ले रहे हैं टुडे, वो आपके लिए पी कंसिडर होगा, और आफ्टर सम टाइम पीरियड एट सर्टन इंटरेस्ट रेट द अमाउंट विल बी कॉल्ड एज अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू और सम, मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये आपके लिए बन जाएगा पी। तो पी आ गया 5000 और टाइम पीरियड 5 ईयर्स, तो एन इक्वल्स टू 5 और इंटरेस्ट रेट 8% है तो 0.08। हाउ मच ही विल रीपे, यानी कि ये कितना रीपे करना पड़ेगा, यानी कि आपने 5000 लिए, 5 ईयर्स के बाद 8% सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आपको कितना रीपे करना पड़ेगा। तो जाहिर है कि अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू। तो अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करें, P 5000 1 प्लस आई आपके पास आ गया इंटरेस्ट रेट 0.08 मल्टीप्लाई बाय 5 और सॉल्व करेंगे तो 7000, यानी कि आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा इसके ऊपर 2000, क्योंकि 5000 आपने लिया था और 2000 आपका इंटरेस्ट लगेगा बीच में और 7000, यानी आपने डायरेक्ट कैलकुलेट किया है ये अमाउंट। और क्वेश्चन नंबर 3.4, a man invest ₹70,000 at 6% per annum and ₹30,000 at 8% per annum. What is the total annual interest on these investments? तो यहाँ पे अब देखें ये इस क्वेश्चन के दो पार्ट बनेंगे, क्योंकि 70,000 के ऊपर इंटरेस्ट रेट और है और 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट रेट और है। तो ये हम दो पार्ट्स में इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पी आपके पास आ गया 70,000, इंटरेस्ट रेट 6% यानी 0.06, और टाइम पीरियड है जी कितना, व्हाट इज़ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट ऑन दीज इन्वेस्टमेंट, तो टाइम पीरियड 1 ईयर है।
तो n आपके पास आ जाएगा 1। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 6% के ऊपर और ये बन जाएगा आपके पास 4200, और फिर आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 30,000 के ऊपर 8%, यानी P आपके पास 30,000 एंड 1 इंटरेस्ट रेट 8% या 0.08, और ये आप वैल्यूज़ बीच में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2400, यानी 70,000 के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया 4200 और 30,000 के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया 2400, तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो है 6600 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3.5, व्हाट सम वुड बोरो in rupees 1250 as simple interest at 3% in 3 years। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फार्मूलाज को याद करना, उनको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझना कि हमने कैलकुलेट क्या करना है। तो व्हाट सम वुड बोरो, कि आप कितना बोरो करेंगे, यानी कि P मिसिंग है इसके अंदर, प्रिंसिपल अमाउंट इन रुपीज़ 1250 एज सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें 1250 सिंपल इंटरेस्ट बने, तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड गिवन है 1250 एट 3%, इंटरेस्ट रेट आ गया आपके पास 3% यानी 0.03 इन 3 ईयर्स, और n आ गया आपके पास 3। तो अब देखें आपके पास दो फार्मूलाज हैं, तो आपने सोचना है कि P कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो P इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट है 1250 इक्वल्स टू P जो कि मिसिंग है मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट 0.03 मल्टीप्लाई बाय n इक्वल्स टू 3, और इसको सॉल्व कर लें P के लिए, यानी कि ये 0.03 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 0.09, P equals to 1250 and P should be equals to 1250 divided by 0.09 and correct answer is 13889। तो principal amount है 13889, which means that you will have to borrow 13889 in order to accumulate simple interest 1250 at the rate of 3% for 3 years। Question number 3.6, find the principal। तो प्रिंसिपल अमाउंट मिसिंग है इसके अंदर। इफ द अमाउंट फॉर 5 ईयर्स, तो n आ गया 5 एट 5%, इंटरेस्ट रेट 0.05 इज रुपीज 5550। अमाउंट फॉर 5 ईयर्स एट 5% इज रुपीज 5550। इट मीन्स दिस 5550 इज योर अमाउंट। Then we should apply here the formula of amount which is equals to P multiplied by 1 plus IN। तो अमाउंट आपके पास 5550 equals to P which we are going to calculate, 1 plus I is your interest rate that is 0.05 and N is 5 which is time period। So first of all calculate this, it will become 1.25 P and solve for P. P should be equals to 5550 divided by 1.25 and that should be equals to 4440। Question number 3.7, how much should Mr. Arif borrow from Mr. Hanif? So how much should Mr. Arif borrow from Mr. Hanif? So P is missing, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मैंने पहले बताया कि ये डिपॉजिट में भी होता है और बोरोइंग में भी होता है। जो पैसा आज आप डिपॉजिट करा रहे हैं या आज आप मांग रहे हैं, सो P is missing here so that he may have to repay rupees 4425, जिसमें आपने 4425 रीपे करना है आफ्टर 3 ईयर्स। तो जो अमाउंट आपने कल रीपे करनी है या डिपॉजिट के केस में जो अमाउंट आपने एक टाइम पीरियड के बाद लेनी है वो आपके लिए अमाउंट होती है। तो 4425 इज अमाउंट फॉर यू। इफ हनीफ चार्जेस अ सिंपल इंटरेस्ट रेट 5%, इंटरेस्ट रेट इज 5% and N is 3, so apply the formula of amount is 4425, P is missing which we are going to calculate, 1 plus I is your interest rate 0.05 multiplied by N is 3, and solve this, that will be equals to 1.15 P and solve for P equals to 4425 divided by 1.15 equals to 3848।
Question number 8, that at what rate of interest, so interest rate is missing, would rupees 1800 amount to rupees 2500, which means that if principal is 1800, it will become 2500, that is amount, in 2 years. So P is 1800, amount is 2500, N equals to 2, and interest rate is missing. So we are going to calculate interest rate. So what kind of formula we can use here? Simply, if we have amount and we have P and we have N, so very easily we can calculate this through the formula of amount. So amount is 2500, P 1800, 1 plus I is missing, multiply by N is 2. So first of all, this 1800 is multiplying on the right side of the equation. When it goes to the other side of the equation, it will be divided. So 2500 divided by 1800 equals to 1 plus 2i. So 1.388 equals to 1 plus 2i. This 1 is something here. When it goes to the other side of the equation, it will be subtracted from 1.388 equals to 2i. And finally, this 2 is multiplying here. When it goes to the other side of the equation, it will be divided. So 0.194. लेकिन यहाँ पे याद रखें कि इंटरेस्ट रेट हमेशा फ्रैक्शन में आता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज के अंदर लाने के लिए. तो I इक्वल्स टू 0.194 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 19.4%. क्वेश्चन नंबर 3.9, find the rate percent of interest. So interest rate is missing. If the simple interest on rupees 21540, so P is 21540 for 4 years, 9 months is 5000. So P is 21540, simple interest is 5000, N is 4 years 9 months. अब 9 months जो है इसको 4 years तो एक हो गए और 9 months out of 1 year मीन 9 by 12, तो ये बन जाएगा 4.75 and interest rate is missing. So simply just put the data into the formula of simple interest and we can calculate interest rate. Simple interest is 5000, P is 21540, multiply by I is missing, and N is 4.75. And finally interest rate is equals to 5000 by 102315, and it should be equals to 4.88%. Question number 10, that at what rate of interest would a sum of money becomes 1.5 in 10 years? Interest rate missing है यहाँ पे, तो I is missing. Would a sum of money becomes 1.5 in 10 years? N आपके पास आ जाएगा 10 टाइम पीरियड. अब यहाँ पे इन्होंने प्रिंसिपल नहीं बताया, बल्कि इन्होंने कहा है कि एक अमाउंट वो 1.5 यानी 1.5 बन जाए 10 ईयर्स के अंदर एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट के ऊपर. देन वी विल हैव टू एज्यूम, हमें फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव 1000 एज पी और ये 1.5 जिस वक्त बनेगा तो ये 1500 बन जाएगा. 1.5 यानी 1000 का 1 जो है यानी कि 100 गुना आपके पास आ गया 1000, और हाफ यानी कि 500 यानी कि 1500 बन जाएगा. और सिंपली अमाउंट का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें. A इक्वल्स टू 1500, P 1000, 1 प्लस I is missing and N is 10, and solve for I, and that should be equals to 0.05 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 5% आपके पास आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3.11, हाउ लॉन्ग विल इट टेक for rupees 1000 to amount rupees 1180 at 6% per annum simple interest. So N is missing here. Interest rate is 6%, which is 0.06. And how long will it take for rupees 1000 to amount rupees 1180? So P is 1000 and amount is 1180. So simply apply the formula of amount here.
1180 equals to 1000 multiplied by 1 plus 0.06 multiplied by n. So 1000 is multiplying here. When it goes to the other side of the equation, it will be divided. So 1.18 equals to 1 plus 0.06 n. 1 is summing here. When it goes to the other side of the equation, it will be subtracted from 1.18, and finally 0.18 equals to 0.06 n, and solve for n, and answer will be equals to 3 years. Question number 3.12. In how many years would a sum lent at 8% be doubled? In how many years? So which means that n is missing, interest rate is 8%, 0.08, and we have to assume P 1000. When it doubled itself, then amount will be 2000. So apply the formula of amount 2000, P 1000, 1 plus interest rate is 0.08 multiplied by n, and solve for n. 1000 is multiplying here. When it goes to the other side of the equation, it will be divided. So 2 equals to 1 plus 0.08 n. 1 is summing here. When it goes to the other side of the equation, it will be subtracted. So finally 1 equals to 0.08 n, and solve for n. So 12.5 years. After that, find the compound interest on rupees 8000. So here compound interest case has started. So as I told you that in case of simple interest, you need two important formulas. One is for simple interest and other is for amount. So same as in the case of simple interest, we will use two important formulas in the case of compound interest. First one formula is the formula of compound interest. First formula is for compound interest, and second formula is for amount. So these are two important formulas which we will use in the case of compound interest. Compound interest formula is P multiplied by 1 plus I raised to power n minus P, and in case of amount, just only remove this minus P, and rest of the formula is the formula for amount. And CI equals to compound interest, P is principal amount, lowercase I is interest rate, and lowercase n is time period. सो बाकी चीज़ें सारी सिंपल हैं, जस्ट हमने क्वेश्चन को पढ़ना है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन को पढ़ के उसमें ये देखना कि व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट. सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज मिसिंग. वी विल हैव टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट. On rupees 8000, so 8000 is P for 3 years, n is 3, and interest rate is 5%, 0.05. So simply use this formula. Compound interest equals to P multiplied by 1 plus I raised to power n minus P. P is 8000, 1 plus I is 0.05 raised to power n 3 minus 8000, and that is factor, that is 1.157625 multiplied by 8000 equals to 9261 minus 8000. So 1261 is your compound interest. Question number 3.14. Find the amount at compound interest of rupees 12,000.
at 6% per annum for 2 years and 6 months. Also find the compound interest. So first of all, what we need to calculate is the amount. So amount is missing. At compound interest of rupees 12,000, in fact it is the principal amount, it is not compound interest. So P should be equals to 12,000. Why it is P? Because also find the compound interest. So which means he used wrong sentence. So just correct it that it is P. So P is 12,000 at 6% per annum. So interest rate is 6% for 2 years and 6 months. यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपने देखना है कि ये केस एनुअल का है, सेमी एनुअल का है, क्वार्टरली का है या मंथली का है या इवन डेली का है. तो हमें यहाँ से ये मालूम हुआ कि ये सेमी एनुअल केस है बिकॉज 2 years एंड 6 months. सो इट इज़ अ केस ऑफ सेमी एनुअल. सो सेमी एनुअल क्या चीज़ है जी कि सेमी एनुअल सबसे पहले ईयरली इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो कि साल में एक दफ़ा दिया जाता है. सेमी एनुअल केस जो है वो केस है कि ये 6% साल में 2 दफ़ा पूरा किया जाएगा, यानी कि 3% 6 माह के बाद आपको दिया जाएगा एंड रिमेनिंग 3% विल बी गिवन टू यू आफ्टर नेक्स्ट 6 months. सो दिस 6% is annual interest rate, but when we convert it to semi-annual, it will become 3%. So 6 by 2. So interest rate will be 0.03. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब n भी चेंज होगा. n इसलिए चेंज होगा कि क्योंकि ये जो आपको पेमेंट्स दी जाएंगी ये साल में 2 दफ़ा दी जाएंगी. तो आपका जो n है वो 2 years and 6 months, which means 2 payments in 1 year and 4 payments in 2 years and 1 payment for this 6 months. So n will be 5. तो n आपके पास बन जाएगा 5. तो P आपके पास आ गया 12,000, 1 plus 0.03 raised to power 5 minus 12,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास बन गया 19,112.24. और सिंपली इसी को अमाउंट के लिए कैलकुलेट कर लें. अमाउंट इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन. पी आपके पास आ गया 12,000, 1.03 रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू 1.15927 एंड अमाउंट विल बी 13911.24. क्वेश्चन नंबर 3.15. मिस्टर असलम हैज़ इन्वेस्टेड रुपीज़ 25,000. तो पी आपके पास आ गया 25,000 at 6% compounded annually. Interest rate आपके पास आ गया 6%. What amount would he received after 4 years? N will be equals to 4 and formula of amount will be applied here. In compound interest case, amount is equals to P multiplied by 1 plus I raised to power N. And simply put the data into the question. 25,000 multiplied by 1 plus 0.06 raised to power 5 and amount will be equals to 31561.9. Question number 3.16. Compute the compound interest on rupees 500. So P is equals to 500 for 6 1 by 2 year. Once again, it is the semi-annual case. 1 by 2 year means half of the year. So in 6 years, there will be 12 semi-annual payments and 1 payment for this. So 12 plus 1 equals to 13. So n should be equals to 13 and here at 2.1 by 2% compounded semi-annually. So 2.5% interest rate, but it is annual interest rate. We will have to distribute in 2 equal interest rate installments. So 2.5 divided by 2 1.25% और ये आपके पास फ्रैक्शन लेने के बाद बन जाएगा 0.0125. So n equals to 13 and interest rate equals to 0.0125. Simply apply the formula of compound interest. P 500, 1 plus interest rate is 0.0125, n is 13 minus 500 and this factor
will be equals to 1.175263, and simply multiply with 500 and minus 500, 87.6315. Question number 3.17. Find compound interest due in case of rupees 1000 loaned for 5 years at 6% per annum. So 1000 is P, time period is N equals to 5, interest rate is 6% per annum, 0.06. So simply apply the formula of compound interest, that is equals to P multiplied by 1 plus I raised to power N minus P. P is 1000, 1 plus I is 0.06 raised to power N equals to 5 minus 1000, and compound interest will be equals to 338.22. In question 3.18, find the compound amount of rupees 10,000 payables at the end of 8 years. So it means that this 10,000 is amount. So 10,000 is find the compound amount which we are going to calculate. Amount is needed to be calculated of rupees 10,000. So 10,000 is P, payables at the end of 8 years, N is equals to 8 at the rate of 6% compounded annually. Interest rate is 6%, 0.06. And we should apply the formula of amount. So P is equals to 10,000, 1 plus I, 0.06 raised to power 8, and this is factor 1.06 raised to power 8 equals to 1.593848 multiply by 10,000, and amount is equals to 15938.48. Question number 3.19. Calculate the compound interest earned for rupees 5,000 invested for 6 years at the rate of 7% per annum. So 5,000 is P, time period is 6 years, N equals to 6, interest rate is 7%, that should be equals to 0.07. And apply the formula of compound interest, which is equals to P multiplied by 1 plus I raised to power N minus P. Simply put all these values into the formula and solve for compound interest, and the answer is equals to 2503.65. Question number 3.20. Calculate the compound interest earned for rupees 1200 invested for 10 years at the rate of 12% per annum. So we are asked to calculate the compound interest earned for rupees 1200 invested. So P is 1200 for 10 years, N equals to 10 at the rate of 12% per annum. Interest rate is 0.12. Simply apply the formula of compound interest, P 1200 and interest rate is 0.12, N is 10. So first calculate this factor, and that is equals to 3.105848. Multiply this factor with 1200, and that should be equals to 3727.0176 minus 1200, and compound interest will be equals to 3527.0176. Question number 3.21. In a saving bank account, Bank A pays rupees 3% interest compounded annually, while Bank B pays 6% interest compounded semi-annually on a deposit of rupees 2000. How much more interest will be earned in 3 years at Bank B as compared to Bank A? So it is the type of question in which we should distribute this question into two parts. First of all, we try to solve the case of Bank A. So what is the data for the calculation of compound interest related to Bank A? So in a saving bank account, Bank A pays 3% interest compounded annually. So interest rate is 0.03. On a deposit of rupees 2000, so P is equals to 2000, and time period is 3 years. So first of all, P equals to 2000, interest rate 0.03, N equals to 3, and when we solve it, compound interest at 3% after 3 years at the deposit of 2000 is 185.454. Now we take the
case of bank B, principal amount is 2000, time period is 3 years, but interest rate is 6% interest compounded semi-annually. So it is the case of semi-annual. So in semi-annual case, interest rate will be equals to 6 by 2 equals to 3%, that is equals to 0.03, and n should be equals to 3 multiplied by 2 equals to 6. क्योंकि ये सेमी एनुअल केस है, ये 3 साल में आपको हर साल 2 दफ़ा पेमेंट्स मिलेंगी, तो ये 6 पेमेंट्स बनेंगी. तो जिस वक्त आप इसको पुट करेंगे इसके अंदर, तो P इक्वल्स टू 2000, 1 प्लस 0.03 रेज टू पावर 6 माइनस 2000, and compound interest in case of bank B is 388.104. Now we can assess or check the difference of two different compound interests, 388.104 and 185.454. If we choose bank B, then we have excess of compound interest is 202.65. In question 3.22, find the principal of rupees 9628.20 due at the end of 8 years if money is worth 6% compounded semi-annually. So it is a case of semi-annual, so 6 divided by 2 equals to 3%, and finally it will be equals to 0.03 after taking fraction. And what we are going to find, we are going to find principal, find the principal. So P is missing, interest rate is 0.03, and when it is the case of semi-annual, n should be equals to 16 because there are 2 payments in 1 year. So in 8 years there are 16 payments, and amount is 9628.20. So simply apply the formula of amount, which is equals to P multiplied by 1 plus I raised to power n. Amount is 9628.20. P which we are needed to calculate 1.03 raised to power 16. Factor is 1.604706, and solve for P. P is equals to 9628.20 divided by 1.604706 equals to 6000. Question number 3.23. The compound interest for 5 years at 5% is rupees 1000. So compounded interest is given, calculated here. So compound interest is 1000 for 5 years. N is equals to 5 at 5%. So interest rate is equals to 0.05. Find the principal. So we can use the formula of compound interest here because compound interest is calculated given here. So compound interest equals to 1000, P is missing, 1 plus I is 0.05 raised to power n, that is 5 minus P. So first of all we will calculate this one. This is called factor. So 1.276281, 1.05 raised to power 5 is equals to 1.276281. Now take the P as common. जिस वक्त आप कॉमन लेंगे इसको P को, तो अंदर आपके पास रह जाएगा जी 1.276281 माइनस 1, क्योंकि ये आपने P आपका इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो ये कॉमन चूंकि आपने लिया हुआ है. तो 1.276281 माइनस 1 इक्वल्स टू 0.276281. सो सॉल्व फॉर P and P will be equals to 3619.50. Question 3.24. In how many years? So n is missing. A sum of rupees 1000 would amount rupees 1350. So P is 1000 and amount is 1350. 4% compounded interest. Interest rate is 0.04. So we are going to calculate time period or n in this question. So use the formula of amount. Amount equals to 1350 equals to P equals to 1000, 1 plus 0.04 raised to power n. 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू 1.35 इक्वल्स टू 1.04 रेज टू पावर n.
जब भी n मिसिंग होगा तो याद रखें कि आपने log लेना है दोनों साइड्स पे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ 1.35 इक्वल्स टू n multiply by log of 1.04. So log of 1.35 equals to n multiply by log of 1.04. And when you take log लेना बहुत आसान है, कैलकुलेटर्स के अंदर आप बड़ा इजीली, जैसे यहाँ पे 1.35 है तो इसका ये log ले लें तो आपके पास log आ जाएगा, तो ये log आप बड़ा इजीली ले सकते हैं। तो उसके बाद n के लिए सॉल्व कर लें, n इक्वल्स टू 0.130333 डिवाइडेड बाय 0.0170333 इक्वल्स टू 7.65 years. In how many years a sum of rupees 5560 would amount rupees 7000 at 8% interest compounded semi-annually? So n is once again missing. A sum of rupees 5560 would amount rupees 7000, which means p equals to 5560 and amount equals to 7000, and interest rate compounded semi-annually, so which means that 8% interest rate is annual interest rate, and in the case of semi-annual case we will have to divide it by 2. In case of quarterly we will have to divide by 4. In case of semi-annual we should divide it by 2. So in this case it is compounded semi-annually, so 8 divided by 2 equals to 4% or 0.04, and solve for n. Amount is 7000, p is 5560, 1 plus 0.04 raised to power n. 5560 यहाँ पे multiply हो रहा है, when it goes to the other side of the equation it will be divided, so 7000 divided by 5560 equals to 1.04 raised to power n. So simply taking log on both sides, log of 1.25899 equals to n multiplied by log of 1.04. Here when you take log, after that solve for n. So n is equals to 0.1000222 divided by 0.0170333, 5.87 years. But hold on, it is the case of semi-annual, so this 5.87 is in annual term, and when we convert it to the semi-annual we will have to divide it by 2. So result is 2.935 or approximately 3 years. 3.26, in how many years a sum of rupees 3000 would amount rupees 6130.43. So that is p and that is a amount. So 3000 is p, amount is 6130.43 at 6% compounded quarterly. So here quarterly means that interest rate will be divided by 4. So 6 divided by 4 equals to 1.5. 1.5% after taking fraction is equals to 0.015. So simply apply the formula of amount. Amount equals to 6130.43 equals to p equals to 3000, 1 plus I 0.015 raised to power n. And after simplifying the equation, it will be equal to 2.04347 equals to 1.015 raised to power n. Now you will have to take log on both sides, log of 2.04347 and n multiplied by log of 1.015 and solve for n, that is 48 years, but it is the case of quarterly. So there are 4 quarters in 1 year. One quarter consists 3 months, so there are 4 quarters in 1 year. So 48 quarters and 48 by 4 equals to 12 years. There are 48 payments. If you want to calculate payments, then these are 48 payments, it's okay. But if the answer is given in the years, you will have to divide quarters by 4. So there are 12 years. Question number 3.27. At what rate of compound interest? So compound interest
rate is missing, so interest rate is missing, will rupees 60180 amounts to rupees 100,000,000 or 0.1 million or 1 lakh in 5 years. So P is 60180, amount is 100,000,000, n equals to 5, and we will have to calculate for I. So amount 100,000,000, P 60180, 1 plus I raised to power 5. So first of all, this 60180 is multiplying here. When it goes to the other side of the equation, it will be divided, equals to 1 plus I raised to power 5. After the division, this will become 1.661681 equals to 1 plus I raised to power 5. And now we will have to remove this power. For that purpose, on the other side of the equation, take this power with the division of 1. So 1.661681 raised to power 1 by 5. Why this is equals to 1 by 5? Here, in fact, it is equals to 5 under root 1.661681 equals to 1 plus I. And when we are needed to remove this under root and this digit, then we will have to take this into power and division with 1. So 1.661681 raised to power 1 by 5 equals to 1 plus I. And always remember that when you take power in division, always use brackets. So 1.661681 raised to power bracket 1 divided by 5 bracket close equals. So it will be equals to 0.10690 or 1.10690, and this 1 is summing here. When it goes to the other side of the equation, it will be subtracted. So I is equals to 0.10690, but it is given in fraction. To get it in the form of percentage, you will have to multiply with 100. So 10.69%. After that, 3.28. At what rate of interest rupees 5,000 double that in 5 years at compound interest? So interest rate is missing, n is 5 years, p is 5,000, double is 10,000. So amount is 10,000. Simply apply the formula of amount. Amount is 10,000, p is 5,000, 1 plus I raised to power n. So 5,000 is multiplying here. When it goes to the other side of the equation, it will be divided. So 2 equals to 1 plus I raised to power 5. And same methodology which I already discussed with you in previous question, that it should be equals to 2 raised to power 1 by 5 equals to 1 plus I. So 2 raised to power 1 by 5 equals to 1.148698 equals to 1 plus I. 1 should be subtracted on the other side, and interest rate is 0.148698. It is given in fraction, multiply it with 100, so 14.86%. 3.29. At what rate of interest compounded per annum for 5 years will rupees 2,000 amount to rupees 2550? So P is 2,000, amount is 2550, n is 5, interest rate is missing. So same methodology should be applied here. Formula of amount is used here. So amount is 2550, P is 2000, 1 plus I raised to power 5, 2550 divided by 2000 equals to 1.275 equals to 1 plus I raised to power 5.
and when we remove this power, it will become the power of 1.275 with the fraction of 1. So 1.275 raised to power 1 by 5 equals to 1 plus I. So 1.049789 equals to 1 plus I. Finally, this one should be subtracted from 1.049789, and interest rate is 0.049789. But in order to get in the percentage, it should be multiplied with 100. So 4.9789, or approximately you can say 5%. Question number 3.30. What is the difference between the compound and simple interest of rupees 15625 for 4 years at 4%? So principal amount is 15625, N is 4 years, interest rate is 4%, and you will have to apply both formulas, simple and compound interest, in order to get the difference of two different type of interest rates. So first of all, we are going to apply the case of simple interest, in which P is 15625, N or time period is 4, interest rate is 4% or 0.04, and solve it for simple interest. Simple interest is equal to PIN, P 15625 multiplied by I is 0.04 and N is equals to 4, and finally simple interest is 2500. In case of compound interest, P is still 15625, lowercase n is 4, interest rate is 4% or 0.04, and apply the formula of compound interest, that is equals to P multiplied by 1 plus I raised to power n minus P. So P is 15625, 1 plus I is 0.04, and n is time period, that is equals to 4 minus 15625, and this is factor 1.04 raised to power 4 is equals to 1.169858. Multiply with 15625 equals to 18279.03125 minus 15625 equals to 2654.03125. Now you are in the position to get the difference of two different interest rates. So compound interest will give you 2654.03125, whereas simple interest will give you 2500. So the difference is 154.03125. If you choose compound interest, you will get extra 154.03125. Question number 3.31. If the difference between the simple and compound interest for 3 years at 5% is rupees 61, find the principal. It is very interesting question that only difference is given, time period is given, interest rate is given, and you are asked to calculate the principal. So first of all, you will distribute this question into two different parts. First part is simple interest, second part is compound interest, and then we are in the position to calculate the principal. So first of all, we are going to calculate simple interest with assumed P. आप फर्ज कर सकते हैं, either you can assume 100, either you can assume 1000 or 10,000, it is up to you. So assumed P is 100, N is equals to 3, interest rate is equal to 5, and solve for simple interest. And simple interest, which is equals to PIN, will be equals to 15. Now take the same data and calculate for compound interest. So assumed P is 100, N equals to 3, interest rate is 5% or 0.05, and compound interest after putting the values into the formula is equals to 15.7625. Now take the difference of these two different interests, compound interest and simple interest. Compound interest which you calculated is 15.7625, and simple interest which you calculated is 15, and the difference is 0.7625. Now take the difference of interest which is given in the question.
and that difference is 61. So finally simply multiply this 61 by 100 with 100 and divide it by this difference 0.7625 and the P is 8000. यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें कि जो आंसर में ये इन्होंने दिया है 8026.32, ये यहाँ पे इन्होंने 25 यानी कि पूरी कैलकुलेशन नहीं ली, जिसकी वजह से ये 8026 है। इसकी करेक्ट कैलकुलेशन जो है वो 8000 है। सो क्वेश्चन नंबर 3.32, the difference between the simple and compound interest on a certain sum is rupees 2.50. For 2 years at 5%, find the principal. यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम डिफरेंस वहाँ पे 61 था, यहाँ पे 2.50 है। तो 2 years at 5%, n equals to 2, interest rate is 5%. So same methodology should be applied here which we used in the previous question. Take assumed P that is equals to 100, n equals to 2, interest rate is equals to 5. First calculate simple interest, after that calculate compound interest, take the difference between these two. Compound interest is 10.25, simple interest is 10, difference is 0.25, and apply the formula for the calculation of P. 100 multiply by the difference which is given in the question, that is 2.50, and divide by the difference which you calculated 0.25, and P should be equals to 1000. So that is the end of the exercise of simple and compound interest. Taken questions from the book Business Mathematics, Muhammad Abdullah. Till next video, stay blessed, take care of yourself and other persons around you, and must share, subscribe and like this video. If you think that this video is beneficial for you, then you should like, subscribe and share. Thank you.